So good morning to all of you and welcome back again in the Balarao Science College Sauner online classes for BSc semester 1. Myself, Mr. C.T. Potode, Assistant Professor, Department of Botany, Balarao Science College Sauner. So dear students, we are going to discuss here that the semester 1 paper 2. In the previous lecture, we have got some disturbances related to this app, and due to the disturbances we could not complete our lecture properly. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐप की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले पाए. that then I had changed this presentation, and the presentation is changed in the form of notes. जैसे कि आप लोगों को कुछ लिखने के लिए मटेरियल चाहिए था, so according to that we have prepared this plan to go for the further lectures. After the completion of the particular topic, ठीक है, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो कोई टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, after the completion of this topic you will get one page of notes that you have to write in your copy. ठीक है, जो आप लोगों को ग्रुप पे एक पेज मिला जाएगा, ठीक है, and that page it is the part of your notes related to this topic, that is semester 1 paper 2, having the name fungi, plant pathology, lichens, bryophyte, and mushroom cultivation. So let's get started with the unit 1 that we are discussing. The unit 1, that is a fungi. Fungi के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे. So let's just talk about the unit 1, that is a part of general characters of fungi. ठीक है, हम लोग जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे फंजाई के. यही नोट्स आप लोगों को फॉलो करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर थियरी एग्जामिनेशन, एंड यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर एग्जामिनेशन फॉर्म्स रिलेटेड टू द सेम वन थियरी पेपर. ठीक है, सेम वन थियरी पेपर के आप लोगों ने एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे ऑफिस में. जल्दी आप लोगों को एक शेड्यूल प्रोवाइड होगा, and that schedule is related with the theory examination of the semester 1. So let's just again started with this general characters of fungi that you have to write all these points in your copy. ठीक है, ये पेज आप लोगों को आपके ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, मैं आपको दे दूंगा ये. ठीक है, and after getting this page you have to write all these points and note down all these points for the reference of this topic, that is the general characteristics of fungi. Also you can get the help of the library from our college. हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी की भी आप लोग हेल्प ले सकते हो regarding the notes and regarding the different points which are related to the particular topic. जैसे कि fungi का अगर टॉपिक है, so you can simply go to the college and library of our college and ask them to provide us the books related with the fungi, just simply the introduction of fungi. ठीक है, आप लोगों को बुक मिल जाएंगी वहाँ पे, टेक्स्ट बुक ऑफ fungi, डिफरेंट ऑथर्स की. वहाँ पे वशिष्ठा करके एक ऑथर है, ठीक है, उनकी बुक अच्छी होती है. ठीक है, एनीवेज तो सेम वन के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ fungi आप लोगों को मिल जाएंगी. बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको लाइब्रेरी में. You can contact to the college and a department of library. ठीक है, library is open at the full time. ठीक है, full time open रहती है library, or you can get the information from the college that what are the days of library open in our college. ठीक है, तो कौन से दिन में open रहती है कॉलेज में लाइब्रेरी, तो आप लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो. Now just let's just come to the point that fungi, हम लोग fungi के बारे में डिस्कस कर रहे थे, that general characteristic of fungi. So fungi are eukaryotic, non-chlorophyllous, heterotrophic organism. fungi जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, non-chlorophyllous and heterotrophic organism. ये तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. Eukaryotic means the organism which do not show well-developed nucleus. Then non-chlorophyllous, they does not show the chlorophyll pigment. Then they are heterotrophic organism, means they cannot synthesize their own food material.
The fungal cell do not contain the chlorophyll or other photosynthetic pigment. फंगल सेल जो होती है उसके पास में कोई भी क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता है या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर एग्जांपल हम लोग जिसे कहते हैं that is the chlorophyll, green pigment. This green pigment is absent in case of the kingdom fungi. Then the vegetative body of fungi, in a general structure अगर हम देखा जाए, the general structure of fungi, it is composed of interwoven mass of thin, tubular, cylindrical, branched hyphae called as mycelium. So from here you can get the complete definition of mycelium. Interwoven, interwoven का मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक दूसरे में जाली के फॉर्म में, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इंटरवोवन स्ट्रक्चर. The vegetative body of the fungi composed of interwoven mass of thin, tubular, cylindrical, branched hyphae called as mycelium. इसे हम mycelium कहेंगे, ठीक है. The hyphae may be septate or non-septate, ठीक है. hyphae जो रहेंगी fungi के केस में it may be a septate or non-septate. तो यहाँ पे non-septate को दूसरा वर्ड दिया है इन लोगों ने सिनोसिटिक, ठीक है. Now in previous lecture we have already taken the information or the meaning of this सिनोसिटिक hyphae, ठीक है. हम लोगों ने सिनोसिटिक हाइफी के बारे में इंफॉर्मेशन ली है. नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू दैट यू हैव टू सेंड मी द आंसर दैट व्हाट इज मीन बाय दिस सिनोसिटिक हाइफी. चैट बॉक्स में आप लोगों को आंसर भेजना है कि सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है, ठीक है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इसके पहले के लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दैट व्हाट इज मीन बाय दिस सिनोसिटिक हाइफी. सो यू हैव टू सेंड me the answer, the exact answer related to this सिनोसिटिक हाइफी. ये सिनोसिटिक हाइफी क्या होती है आप लोगों को बताना है. मैंने बताया था आप लोगों को सिनोसिटिक हाइफी. देखते कितने लोगों का आंसर आता है और कितने लोग सीरियसली लेक्चर को सुनते हैं, समझते हैं और अटेंड करते हैं. So there is one answer. मृणाली वालुकर, then Janvi Gandole, then Mayuri Jutode, वैष्णवी सावरकर. यार ये नाम किसका है पता नहीं. ओप्पो A5s. आपने अगर अपने सिस्टम का नाम चेंज नहीं किया है वहां से तो आपने अपना नाम भेजना है. अपेक्षा ठाकरे, राइट. निकिता ये लेकर, देन युगवंती कोड़ापे, मृणाली वालुकर. Okay, thank you for the response and all of you are given answers. मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ आंसर. मृणाली वालुकर ने आंसर दिया है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट. ये पहला आंसर था. इन्होंने दूसरा आंसर भी भेजा है. जानवी गांडोए विदाउट सेप्टा. देन मयूरी जूतोड़े, हाइफी विदाउट सेप्टेट आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफी. देन वैष्णवी सावरकर, मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड हाइफी. देन अपेक्षा ठाकरे ने भेजा है मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड हाइफी. निकिता एलेकर, मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड हाइफी इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफी. युगवंती कोड़ापे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. एंड मृणाली वालुकर सेंड अगेन organism made up of multinucleate continuous mass of protoplasm enclosed by one cell wall. इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस में आ जाता है आंसर उसका. बाकी लोगों ने भेजा है जैसे संजना पांगे असेप्टेड हाइफी, ठीक है. तो असेप्टेड हाइफी को हम लोग सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं क्या? नहीं, असेप्टेड हाइफी नहीं. यहाँ पे निकिता एलेकर ने राइट आंसर दिया है मल्टी न्यूक्लिएटेड असेप्टेड हाइफी, राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड एक्सपेक्टेड आंसर है that multinucleate aseptate hyphae is called as और यहाँ पे अपेक्षा ठाकरे ने भी दिया राइट आंसर.
So this multinucleate or septate hyphae is called as a सिनोसिटिक hyphae. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने नॉन सेप्टेट hyphae को सिनोसिटिक hyphae कहा है. अगर हम लोग टेक्निकली जाते हैं, so that the hyphae which having the multinucleate, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट hyphae भी होती है, मल्टीन्यूक्लिएट hyphae भी होती है. तो जो hyphae मल्टीन्यूक्लिएट होती है वो और असेप्टेट होती है, तो उस hyphae को हम लोग सिनोसिटिक hyphae कहते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. So this is a point related with the mycelium and hyphae. That mycelium, it is the body of fungi that in the previous lecture we have discussed. हम लोगों ने discuss किया था. The body of fungi, it is made up of the interwoven mass of thin tubular cylindrical branch structure. And the hyphae, it is made up of the large number of network-like structure of the thin filament. बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे, फिलामेंट्स जो रहेंगे, उसका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. एंड दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द माइसेलियम. दिस माइसेलियम, इट इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ फंजाई. ये बॉडी ऑफ फंजाई होती है. अभी इस माइसेलियम से अगर हम लोग सिंगल फिलामेंट निकालते हैं, दैट सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड एज द हाइफी. तो सिंगल फिलामेंट को हम क्या कहेंगे? हाइफी. Now this hyphae, it may be septate or aseptate. Hyphae जो रहेंगी वो एक तो septate रहेंगी या फिर aseptate रहेंगी. ठीक है. Now what is this septate hyphae? That hyphae without, hyphae with branch or the compartments. जिस hyphae में branch present रहेंगी और compartments present रहेंगे, that type of hyphae is called as a septate hyphae. And hyphae without branch or without cross walls is called as aseptate hyphae. ये जो aseptate hyphae रहेंगी, that aseptate hyphae and the multinucleate hyphae. ठीक है, the multinucleate aseptate hyphae is called as सिनोसिटिक hyphae. चलो आगे बढ़ेंगे. Each fungal cell contain the definite nucleus, hence they show eukaryotic cellular organization. हर एक फंगल सेल के पास में डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है. Now what is this definite nucleus? It is a part of the well developed nucleus. And what about this well developed nucleus? The nucleus which consists of the nuclear membrane, nucleoplasm and histone protein. जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस न्यूक्लियस को हम लोग डेफिनाइट न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं. The fungal cell, it consists of the definite nucleus, that is the well developed nucleus. That's why the fungi, it is called as eukaryotic organism. इसलिए इन्हें eukaryotic organism कहा जाता है. The fungal cell contain the definite nucleus, hence they show the eukaryotic cellular organization. The hyphae may be uninucleate or multinucleate. Hyphae जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएट भी होती है और मल्टीन्यूक्लिएट भी होती है. ठीक है, तो हम लोग यूनिन्यूक्लिएट और सेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कह सकते हैं क्या? यस और नो? टेल मी. मैंने आपको पूछा है, हम लोग यूनिन्यूक्लिएट और सेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कह सकते हैं क्या? यस और नो? वैष्णवी सावरकर नो. चेतना पडोले यस. एनीवन अगेन इन द क्लासरूम? बस दो ही लड़कियां है क्या? संजना भांगे नो. देन क्यू कॉम बीटीडी नो. निकिता एलेकर नो. ओप्पो A5s नो. खुशी ढोबरे यस. D97FEF5 नो. देखो ये इतना लंबा चौड़ा नाम लेने की वजह आप लोगों को एक सिंपल स्टेप करनी है. जब भी आप लोग ज्वाइन मीटिंग करते हो तो ज्वाइन मीटिंग करते समय मेरा नंबर तो ऑलरेडी वहां पे मैंने आईडी नंबर जो होता है वो ऑलरेडी डाला हुआ रहता है. उसके नीचे एक बॉक्स आता है, वहां पे आपकी सिस्टम का नाम रहता है. उसको हटा के जस्ट वहां पे क्लिक करके उसको हटा के आपका नाम डालना पड़ता है. सिंपल स्टेप है, इतना भी नहीं कर पाते क्या आप लोग? एनीवेज, मयूरी जीवतोड़े नो. Okay,
So the correct answer, my question is, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ. मैंने क्वेश्चन पूछा था कि that is it the uninucleate or septate hyphae is called as synocytic hyphae. हम लोग यूनिन्यूक्लिएट और सेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कह सकते हैं या नहीं, ये यस और नो पूछा था. सो आंसर इज नो. वी कैनॉट कॉल यूनिन्यूक्लिएट or septate hyphae is a synocytic hyphae. Only the multinucleate or septate hyphae is called as synocytic hyphae. तो जिन लोगों का आंसर यस था वो लोग थोड़ा अभी जाग जाए नींद से, ठीक है, और थोड़ा अटेंटिवली वहां पे ध्यान देना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत टाइम पास करते हैं लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है. ऐसा मतलब नहीं है कि वीडियोस ऑफ है तो हम लोग दिख नहीं रहे हैं, ठीक है. आपके रिस्पॉन्सेस पे भी डिपेंड करता है कि दैट वेदर यू आर अटेंटिव इन द लेक्चर और नॉट, ठीक है. सो माय क्वेश्चन इज टू मिस प्राजक्ता नांदगांवकर. मेरा क्वेश्चन प्राजक्ता नांदगांवकर से है. टेल मी दैट व्हाट इज मीन बाय द सिनोसिटिक हाइफी. एनीवेज आंसर दे दिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं. So the hyphae are always uniseriate and not bi, tri or multiseriate. ठीक है, hyphae जो होती है वो हमेशा uniseriate ही होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है. It is not always uniseriate and uniseriate होती है and not bi, tri or multiseriate. Now what is this uniseriate, biseriate, triseriate, multiseriate? ठीक है, hyphae is always uniseriate, ठीक है. हाइफी जो होती है वो यूनिसेरिएट होती है, दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज देयर इन केस ऑफ द फंजाई, ठीक है. फंजाई जो होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेरिएट, ठीक है. यूनिसेरिएट, नॉट बाय, ट्राई और मल्टीसेरिएट, ठीक है. इट इज नॉट बाय, ट्राई और मल्टीसेरिएट, ठीक है. बाय मींस टू, देन try, tree, multi, more than 3 branch, ठीक है. So hyphae are always uniseriate, एक ही डायरेक्शन में रहती है hyphae, ठीक है. So it is always uniseriate in structure. It is not bi, tri or multiseriate. The nuclear envelope does not break down during the mitosis or meiosis, ठीक है. न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डेफिनाइट न्यूक्लियस अगर होता है, that definite nucleus consists of the nuclear membrane, nucleoplasm and histone protein. This nuclear membrane, it is a part of the nuclear envelope, ठीक है. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर एनवलप का पार्ट होता है, और ये न्यूक्लियर एनवलप जो होता है इट डज नॉट ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब न्यूक्लियर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है फंजाई के केस में at the time of mitosis or meiosis. That mitosis or meiosis, it is the part of the cell division. खुशी डोबरे, जब पूछा जाता है तभी आप लोगों ने आंसर देना है, टाइम पास में मैसेज नहीं करने हैं, राइट. अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लासरूम. So that the nuclear envelope does not break down during the mitosis or meiosis, ठीक है. न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है एट द टाइम ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन. द रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फैट एंड ऑयल. सो द क्वेश्चन अराइजेस, इन केस ऑफ द फंजाई, रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हिच मटेरियल, ठीक है. फंजाई के केस में रिजर्व फूड मटेरियल कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फैट and it is in the form of oil. The first expected answer, that is the glycogen. जैसे कि हमें पता है प्लांट्स के केस में रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में रिजर्व किया जाता है, राइट. Similarly, in case of the fungi, the reserve food material is present in the form of glycogen, fat and oil. The starch is absent in case of the
फंजाई, जब फंजाई होते हैं तो फंजाई के केस में स्टार्च एब्सेंट होता है. स्टार्च इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, which is present in case of plants. Next point, the cell wall contains the fungal cellulose or chitin or both, but pure cellulose is totally absent. So in case of fungi, the cell wall is made up of fungal cellulose or chitin. Fungi के केस में हमें पता है कि सेल वॉल जो बनी रहती है, it is made up of fungal cellulose or chitin or both, but pure cellulose is totally absent in case of the fungi. Fungi के केस में pure cellulose जो होता है वो. So here we are going to discuss that the cell wall of fungi, it is made up of the fungal cellulose. ठीक है, cell wall जो होती है, it is made up of fungal cellulose or it is also called as chitin. ठीक है, उसे chitin भी कहा जाता है. ट्रू सेलुलोज विच इज द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ट्रू सेलुलोज जो होता है वो प्लांट सेल में रहता है कि जो ऑब्सेंट रहता है इन केस ऑफ द किंगडम फंजाई. आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट देखते. द सेल साइटोप्लाज्म कंटेन द सेल ऑर्गेनेलीज एंड इंक्लूजन्स. फंगल सेल जो होती है उसके अंदर क्या मिलेगा हमें? साइटोप्लाज्म. This cytoplasmic material of the fungal cell, it consists of the cell organelles. इसमें आपको सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी. कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी आगे देखते हैं हम लोग. So we get the cell organelles, हमें सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी यहाँ पे. That cell organelles will obtain in case of the fungal cell, and at fungal cell it get So here we are going to discuss that fungal cell, it get some cell organelles. The cell organelles like the endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, vesicles and microtubules. ठीक है, ये जो cell organelles है, these cell organelles are present in case of the fungi. ठीक है, तो fungi के केस में ये cell organelles present रहेंगी. यहाँ पे कौन सी cell organelles present रहेंगी? The cell organelles like the endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, vesicles and microtubules. कोई भी जो नॉर्मल सेल होती है उस नॉर्मल सेल को कंप्लीट सेल कहने के लिए उसके पास में सेल ऑर्गेनेलीज होना जरूरी होता है. ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट एज द कंप्लीट सेल, और दैट सेल इज कंसिडर्ड एज द primitive type of cell. So the cell cytoplasm contain the cell organelles and inclusions. The fungal cell organelles includes the endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, vesicles and microtubules. The Golgi bodies are absent in case of the kingdom fungi. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Golgi bodies जो होती है वो absent होती है kingdom fungi के केस में. The cell inclusions includes vacuoles, crystals, glycogen, and lipids. Starch grains are absent in case of the kingdom fungi. Kingdom fungi के केस में starch grains जो होती है वो absent होती है. Next point, DNA acts as a genetic material. In case of fungi, genetic material जो होता है वो होता है DNA. And this DNA acts as a genetic material. ये DNA genetic material का काम करता है. Then mode of nutrition in case of the kingdom fungi, it is mostly by absorption and rarely by ingestion. ठीक है. Mode of nutrition जो होता है, mode of nutrition मतलब that how they get the nutrition or the food material.
उन लोगों के पास ऐसा कुछ माउथ जैसा स्ट्रक्चर तो होता नहीं फंजाई के केस में, दे सिंपली जस्ट हैविंग द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है, उनके पास में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है कि जिसे हम लोग हाइफी कहते हैं। These hyphae they get penetrate into the food material. Hyphae जो होती है वो food material में penetrate की जाती है, and after the penetration of this hyphae they get absorb the food material from that particular organism. That's why they use the word mode of nutrition is mostly by the absorption and rarely by ingestion. Ingestion मतलब consuming with the help of mouth, right? तो माउथ जैसा कोई स्ट्रक्चर तो फंजाई के केस में होता नहीं है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज नथिंग बट द माइसेलियम एंड हाइफी। नाउ दिस माइसेलियम एंड हाइफी इट गेट पेनिट्रेट इनटू द फूड मटेरियल और द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो हाइफी होती है वो फूड मटेरियल में या फिर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती है, and after the penetration they go for the absorption of nutrient from that particular organism. Next point, they may be parasitic, hyperparasitic, saprophytic and symbiotic. यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है हमें, कौन सा? हाइपर पैरासिटिक। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन that what is the meaning of these words. So in case of the fungi they may be parasitic. फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक मीन्स दे डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज द इन्फेक्शन, ठीक है। टू वर्ड्स आर देयर, पैरासिटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। पैरासिटिक मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग द फूड मटेरियल एंड कॉजेज इन्फेक्शन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में वो इन्फेक्शन या फिर डिसीज क्रिएट करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे पैरासाइट्स। हेटेरोट्रॉप्स अलग होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बट दे डज नॉट कॉज इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करते, तो उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। सो द फंजाई आर मोस्टली द पैरासिटिक, देन हाइपर पैरासिटिक। नोटिस दिस हाइपर पैरासिटिक। ये हाइपर पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? हाइपर पैरासिटिक मतलब वन पैरासाइट्स डिपेंड अपॉन अनदर पैरासाइट। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे जब डिपेंड होता है, ठीक है, फॉर गेटिंग द फूड मटेरियल, राइट। वन पैरासाइट डिपेंड अपॉन अनदर पैरासाइट। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोगों को पपीज पता है, डॉग्स पता है, डॉग्स, राइट, कुत्ते पता है, ठीक है। उनके बॉडी पे कुछ फ्लाइज घूमते रहती है, ठीक है। दैट फ्लाइज दीज आर पैरासिटिक इन नेचर। वो फ्लाइज जो होती है, या फिर गाय वगैरह जो होती है, तो गाय के बॉडी पे भी वो टर्माइट्स वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, राइट। तो हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं, डॉग्स के बॉडी पे जो फ्लाइज घूमते रहती है वो पैरासाइट्स का काम करती है। उन फ्लाइज के बॉडी में भी दूसरे कुछ बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं एज अ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स के बॉडी के अंदर दूसरे पैरासाइट्स, दैट इज अ केस ऑफ हाइपर पैरासाइट्स, राइट, ठीक है। हाइपर पैरासाइट्स मतलब वन पैरासाइट्स डिपेंड अपॉन अनदर पैरासाइट्स। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पे जब डिपेंड रहता है, ठीक है, या फिर उससे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, दैट इज अ केस ऑफ हाइपर पैरासाइट, ठीक है, उसे हम हाइपर पैरासाइट कहेंगे। तो पैरासाइट अलग हो गया, हाइपर पैरासाइट अलग हो गया। So the fungi they may be parasitic in nature, they are hyperparasite, saprophytic, ठीक है। चलो saprophytic का मीनिंग भेजो मुझे आप लोग फटाफट, send me the meaning of saprophytic। देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। आई एम एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट प्राजक्ता नांदगांवकर। saprophytic मीनिंग, जितना जल्दी भेजोगे इतना, इसका मतलब आप लोग रिवीजन करते हो, और जितना लेट भेजोगे इसका मतलब आप लोगों ने कहीं से भी सर्च करके या फिर देख के भेजा है।
यहाँ पे D97F1EF5 ये किसका सिस्टम नेम है पता नहीं, आंसर आया है। उसके बाद में अमीषा छानीकर का आंसर आया है। ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। इन दो ही कैंडिडेट ने आंसर दिया है। उसके बाद में दुनाली वैल्यूकर और संजना बांगे का लेट आया है आंसर दोनों का। और आंसर भी पढ़ के देखता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे D97F1EF5 जो कोई है उसने आंसर दिया है डिपेंड्स अपॉन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। अमीषा छन्नीकर ने आंसर दिया एब्जॉर्बिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दुनाली वालुकर डेड मैटर प्रेजेंट होती है। संजना बांगे grows on decaying matter and nourish from it. एंड दुनाली वालुकर सर हमारा आंसर से नहीं हो रहा है। फिर ये कैसे आया सर, हमारा आंसर सेंड नहीं हो रहा, ये कैसे आया फिर? एनीवेज, so the correct answer and the proper answer was given by that अमीषा छानीकर, absorptive mode of nutrition। ये बहुत बार बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। एनीवेज, so the saprophytic mode of nutrition, that absorptive mode of nutrition, ठीक है। organism which show the absorptive mode of nutrition, it is called as saprophytic condition। इसे हम saprophytic condition कहेंगे। then they are symbiotic। fungi जो होती है वो symbiotic भी होती है। symbiotic means they are living in association। the organisms which are living in association which show the mutualism means the two different partners or the two different organisms when living in association and both are benefited to each other, that condition is called as a symbiotic condition। उसे हम symbiotic condition कहेंगे। so the fungi are symbiotic in nature। they represent a zygotic life cycle। तो zygotic life cycle शो करते हैं। zygotic मतलब the formation of the fusion of gametes, right? The male gamete and a female gamete। in case of the fungi there is a presence of positive and negative strains। हम लोग जो देख रहे थे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से पहले, अभी देखेंगे अभी आगे भी। they grow at the maximum 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ज्यादातर ग्रो होते हैं। ऑप्टिमम एट 22 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम एट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दी है टेम्परेचर की, कि जो फंजाई कहाँ पे किस किस कंडीशन में ग्रो हो सकती है। so the fungi successfully grow in case of 2 to 5 degree centigrade, optimum at 22 to 27 degree centigrade, maximum at 35 to 40 degree centigrade। so we have to stop here and this page will be provided in your group। आप लोगों के ग्रुप पे ये पेज प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों ने आपके कॉपी में एक कॉपी कर लेनी है। आप लोगों ने उसमें नोट डाउन करने हैं या फिर आप लोग इसकी प्रिंट भी ले सकते हो। so now you just have to go in your chat box and write down there your name and present, one word, that is present। आप लोगों ने अपने चैट बॉक्स में जाना है और वहां पे अपना नाम और प्रेजेंट करके एक वर्ड लिखना है।